Yes, I hope it is now live. Yeah, in a minute. It is still showing me buffer. Oh, yeah, perfect. 1 second. You can continue. Okay. Okay. Hello, everyone. So, good afternoon, everyone. So, basically, today we are starting to talk about the Reiki. So, I hope for that, please possible then on your video so we can make this call little bit interactive. So, you will get the some understanding that why and how you can join this workshop later on. Yeah, so good afternoon is yeah, Milinji. Yes. If possible, then on your video, let's we move ahead in our space. Okay, so before let's we talk about Reiki. So this is our completely demo call for the Karuna Reiki, and I am the Grandmaster of Karuna Reiki since 2020. So, before we understand the Karuna Reiki, let's we understand about the Reiki. Reiki का full form है. The meaning of Reiki is Re is equal to universal and the Chi is equal to energy. So universal energy flow. So Reiki started from as per our knowledge and our entire the understanding. The started with the Usui Reiki. So Usui Reiki channelized by Mikao Usui, and that is understanding the we started with that Usui Reiki, what is Reiki and how it works. But before we start about the Reiki and understanding the Karuna Reiki, let's we understand one protocol. I hope you all are here and listening me to just give me reply how many of you trust on divine energy, divine connection, divine language, divine message, and divine time. You just write it down in which you are into the trust of the energy, connection, language, message, and time. Let me just share on the chat how many of you believing in this space and which space you are believing in. I hope you all are here and possible then on your video and just let me know how many of you believing in all these five or you are believing in the some particular space. Just let me know. Yes, Dr. Suvarna ji, thank you so much. Rest all, if possible, then give me the reply so I can able to understand all these five. Thank you, Milin ji. Anyone else wish to share anything that you are believing in one aspect, two aspect, three aspect, or all five aspect? Okay, so let it be. I hope you all are aware. I am believing great Samson, whoever he is or she is. Thank you so much for we are not putting so much time on that. So let me connect with more aspect. Why I asked this? मैंने ये क्यों पूछा? So basically, if we are not believing in divine energy, so इसके आगे की बाकी की चारों चीजों पे we are not trusting. Okay, first of all, that we all have to connect with that space that we are believing divine energy. Lot of energy flow, universal energy flow, divine energy flow, contributing energy flow is around us. If you are not believing in this first aspect, then Reiki, I can say right now, Reiki not for you. Because Reiki based on only this one aspect, that is the divine energy. Once we start believing in that, we have completely faith on it, then we are understand the divine connection, and then we are able to believe that if divine energy is there, then the divine connection is also there. After that connection, then you're able to believe that divine language is also is there. If we are talking to each other with this right now in English or Hindi language, then similarly
we have divine language. When we, with that language, we are able to connect with the divine energy. And once we are able to connect with this divine language, with that language, similarly, or maybe we decode with our own language, that is we called as a divine messages. And then once we start to acknowledge and believe that messages, then we are able to surrender ourselves for the divine time. How many of agree with me this file space? If you are agree with me, show me your thumb. Thank you, Praful ji, showing your lovely face. If possible, then on your videos so we are able to connect with you energetically. Because after this entire workshop, we have a beautiful short meditation utilizing the Karuna Reiki. So let me know how many of you believing in this five space. If the divine energy is there, then we are able to connect with them. And for that connection, there is some divine language in this universe. With that language, we are able to connect them, able to ask and receive as per that, and able to create that space of receiving message, and with that message we are able to surrender ourselves in that divine time. So let me know, let's we go towards more. So if anyone is in Hindi, please tell me in the chat box, or little bit we more move towards the English language. Then if we understand this five aspect, then we have to understand this three aspect. If you Hindi, please. Yeah, definitely, Neela ji. So before we start the understanding this another three aspect, I just go through this divine five six things. हम जब ये पांच चीजों पे बिलीव करते हैं, तब वहां से ही हम अपनी रेकी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डिवाइन एनर्जी पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो उसी से हमारी रेकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है। अभी हम ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, देन वी आर एबल टू कनेक्ट विद द रेकी, बिकॉज रेकी इज इक्वल टू यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो। तो हम उससे कनेक्ट होके हम उसके थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं। तो एनर्जी पे रिसीव करने के बाद हम डिवाइन कनेक्शन पे बिलीव कर सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन पे जितना हमारा ट्रस्ट बैठेगा, धीरे धीरे हम डिवाइन लैंग्वेज को समझना स्टार्ट करेंगे। इवन दो वी लर्न द डिवाइन लैंग्वेज in different reiki form with the symbolic language, that is also the divine language. Then you are able to decode the divine language as a divine messages. Once you are able to decode it, you are understand this is the divine message, you are able to surrender yourself and receive whatever you desire and deserve. तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है। अभी इसके बाद हम इनकेस ये पांचों चीजों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वहां से क्या हमारी रेकी की जर्नी कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं बोलूंगी नहीं। उसके बाद आपको ये थ्री एस्पेक्ट पे वर्क करना है। कौन से थ्री एस्पेक्ट पे है? तो चॉइस, सरेंडर एंड एक्शंस। तो फर्स्ट हम समझते हैं चॉइस को। फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी चॉइस। जब हम चॉइस की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारी कोई चॉइस बनती है, तो वो कोई भी हो सकती है। वंस वी क्रिएटेड अवर चॉइस, मे बी दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूटिव, or maybe that is non-contributing. How sometimes we blame others and we are putting all the choice towards that. Sometimes we are into the anger and frustration, we are putting as per some choice. Sometimes we are into the guilt and we are creating as per that guilt our choice. And some our choice is completely into the desire and deserve side, whatever we are. Manifestation is all about the how you are willing to have a ease in your relationship, ease in your health, ease in your financial reality, ease into, there is a lot of choice we have. So whenever we are utilizing reiki in day to day life, we have to make sure that we have to be particular for about more about our choice. सो जब भी हम रेकी के लिए यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, वो जो भी हम रेकी सीखे हैं, जो भी हम हीलिंग सीखे हैं, तो ये एस्पेक्ट सबसे पहले होता है कि आप डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट करके ये पूरा प्रोटोकॉल के बाद आप क्या चॉइस बना रहे हो।
आपकी चॉइस टूवर्ड्स क्या जा रही है, उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा। आप गिल्ट के बाद पूरी टाइम गिल्ट की अकॉर्डिंग चॉइस बना रहे हो, गुस्से में हो तो एज अ एंगर यू आर पुटिंग एवरी चॉइस अकॉर्डिंग टू एंगर, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव आउटकम आपको चाहिए उसके साथ जुड़ी हुई आप चॉइस बना रहे हो। अकॉर्डिंग टू दैट यू आर क्रिएटिंग द एंटायर स्पेस इन योर यूनिवर्स, दिस इज माई चॉइस। एंड वो ही चॉइस के बाद आपको रेकी हीलिंग के थ्रू सरेंडर करना है डिवाइन को। जब आप डिवाइन को वंस यू क्रिएटेड चॉइस, देन आफ्टर पुटिंग रेकी हीलिंग डेली बेसिस एज अ एक्शन, you have to surrender yourself to the divine, divine space, divine energy, divine time. Once you surrender yourself, then as that during that surrender and reiki practice, you will guided by some messages, and through that messages you have to start doing taking some actions. तो जैसे ही आप चॉइस बना लोगे उसके बाद आपको अपने आप को सरेंडर करना है रेकी प्रैक्टिस के साथ। रेकी प्रैक्टिस के साथ आप सरेंडर कैसे करोगे वो भी हम आगे सीखेंगे। वो करने के बाद जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दैट मैसेजेस एंड उस पे आपको एक्शंस लेने हैं। तो ये स्पेसिफिकली होता है जब भी आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो। तो ये टू एस्पेक्ट बहुत जरूरी है टू बिलीव इन टू द डिवाइन, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज you have to surrender yourself to the divine. So and then you have to create the beautiful choice accordingly your desire and deservedness, and then you just keep practicing reiki and then surrender yourself and allow yourself to receive the beautiful messages from the divine and take action accordingly. That till that everyone is with me, that is simple for each and everyone. Because whenever you start to practice reiki healing, you have to understand this two concept. If you are not being that concept, you are not ready to be the perfect, I can't say perfect, but you are not ready to be that actually the energy of reiki healing. So let's we move ahead into the next slide. The next slide is all about the Reiki myths. So whoever into the my past some Reiki workshop, they all know maybe about the Reiki myths, which I always used to say. These are the myths, and you have to understand and you have to release from your universe. Once you release these myths, that allow you to have that space to be a divine Reiki healer. So, first is Reiki is done by the healer's personal energy, that is completely no. ये रेकी की प्रैक्टिस हीलर की पर्सनल एनर्जी से नहीं होती है। रेकी द हीलर इज ओनली द मीडियम इन दिस रेकी प्रैक्टिस, so through healer's energy the reiki passing towards द पर्सन जिसको हीलिंग चाहिए, जिसको हीलिंग आप सेंड करना चाहते हो, आपके थ्रू वो हीलिंग उससे जा रही है, बट आपकी एनर्जी उससे नहीं जा रही है। दैट इज द मेन एस्पेक्ट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दैट मिथ्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फील कि आई फील ड्रेन आफ्टर द रेकी हीलिंग बिकॉज माई एनर्जी, मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, माई एनर्जी इज यूटिलाइजिंग हियर। दैट्स नॉट ट्रू, योर एनर्जी इज नॉट यूटिलाइजिंग हियर इन दिस रेकी हीलिंग। दिस इज completely you are only the medium. So sometimes some people has questioned that why then we feel drained, because during this medium the reiki is also working on you, and during that space you are also healing your space, and that healing may be creating the low energy in your space. So after detoxification sometimes we feel also drained. So similarly this become a detoxification during the reiki energy detoxification. So this is completely not truth. Then second is reiki works only if someone believes in it. That is completely not true. हम कह सकते हैं मे बी द रिजल्ट्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू बिलीव सिस्टम, यानी रेकी उस पे भी काम करती है जो बिलीव नहीं कर रहा है, बट शायद उसके रिजल्ट में थोड़ा बदलाव आ सकता है।
Reiki belongs to one religion or culture? Completely no. It's all about the universal energy flow. It is not about the any religion, Krishna, Shiva, Ganesha, and Christ consciousness. It's not about that. Not any culture, as well as it is completely based on universal energy flow. Reiki is about ritual and complicated practice. No, this is very simple and very easy. Once you learn with me, you will get the entire essence how I made this Reiki healing very easy. Reiki drains the healer's energy completely. No, as I talked in the first line, that Reiki not draining your energy, Reiki is cleansing your energy field. So that's why sometimes you felt as a because of detoxification of energy field, you felt some drain because of that. That is the not drain, that is the low energy because your space is completely clean now. रेकी इज ओनली फॉर फिजिकल हीलिंग? नो, रेकी आपका फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग करता है. रेकी टेक्स ईयर टू लर्न? नो, that is completely no. I can see in my space I have a 100 plus students who are practicing reiki. They are creating magic within a one day. They are starting create a magic within a one day. So it's not about years to learn and years to create a magical effects in people's life and our life. Reiki is slow and doesn't work on serious issue. No, it's not about that. Reiki is very powerful. The main aspect is how the choice is perfect, how you are surrendering, and how you are listening the divine messages and taking action towards it. If you are doing these three things and the intention and the choice is completely pure, you are creating a very good result. You will create a magical result with the reiki. Reiki is about controlling energy? No, it's not about that. More about the surrendering towards the energy. Surrender yourself toward the energy. Only a few gifted people can practice reiki? No, एवरीवन इज गिफ्टेड विद द रेकी एनर्जी. बाय बर्थ हम सभी के साथ वो यूनिवर्सल एनर्जी जुड़ी हुई रहती है और वही यूनिवर्सल एनर्जी को हम कंटिन्यूसली हमारे सातों चक्रास से रिसीव एंड रिलीज कर रहे हैं लाइक अवर ब्रेथ. Okay, so we all are gifted with that tune. The thing is, once you start practice Reiki, you are tuning with that energy and you just align with that energy. You must learn all type of Reiki to be a good healer. No, it's not about it. You just start learn Reiki, then afterwards Reiki will guide you कि what kind of healing modality now you have to learn or now you have to add on in your practice the according to your choice. See the choice, surrender, message and action. So once you start putting choice, what is your choice, accordingly you feel guided by the divine messages. Reiki must always follow strict rules? No, you can shower reiki, you can heal yourself or others with Reiki without any rules, that it will also amazingly works. So it's all about the Reiki. Now we just know talk about the what is Karuna Reiki. So Karuna Reiki is as an advanced healing system developed by William Lee Rand. So after Usui Reiki, the person is channeled with this Karuna Reiki symbolic energy. And the Karuna is mean about the compassionate action. Works on it's this Reiki works on deeper emotional and karmic layer. तो ये जब उसुई रेकी के प्रैक्टिस के साथ इन्होंने ये करुणा रेकी के सिंबल्स चैनलाइज किए हैं और जैसे कि मैंने बताया चॉइस, सरेंडर, मैसेजेस एंड अकॉर्डिंग टू यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन. तो उन्होंने सिंबल्स की प्रैक्टिस करते हुए उन्हें समझ में आया कि दिस सिंबल्स आर मोरली वर्किंग ऑन डीपर इमोशनल एस्पेक्ट एंड कार्मिक लेयर्स एंड देन दिस इज हायर वाइब्रेशन देन उसुई रेकी. उसके बाद ये उसुई की और एनर्जी को कैसे एक्सपैंड कर रहा है, इसकी एनर्जी में मोर कितना डीपर वर्क कर रहा है, वो उन्होंने
फील किया, उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड देन ही स्टार्टेड टू एडिंग दिस न्यू ब्यूटीफुल सिंबल्स एंड क्रिएटिंग मैजिक, एंड देन ही created the space of entire Karuna Reiki level 1, 2 and 3 system. सो स्पेसिफिकली ये कहाँ पे काम कर रहा है? ट्रॉमा रिलीफ, शेडो हीलिंग, इमोशनल क्लींजिंग एंड डीपर सेल्यूलर हीलिंग। एंड देन इसका जो ग्रैंड मास्टर लेवल है वो मोर डीपर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ अट्यून करता है. दैट इज मोर अबाउट द different aspect we will take on the next few slide, after few slide. So how Karuna Reiki works? Uses high frequency symbols with specific intention. So intention is all about how you are putting your choice. Activating deep subconscious healing, clear emotional wound store in cells and chakras, and then bring compassion, self-love, peace and spiritual awakening. So basically करुणा रेकी के सिंबल्स, उसुई रेकी के सिंबल्स के बाद के एडवांस एनर्जी हीलिंग्स है, जहां पे आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सिंबल्स है और आपके इंटेंशन के साथ ये वो डीप सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं. आपके जो भी इमोशनल वुंड्स है, आपके सेल्यूलर मेमोरीज है, आपके चक्रास जो इम्बैलेंस है उसे वो बैलेंस करते हैं. और इसी के साथ ये सब चीजें होने के बाद आपकी स्पेस में वो कंपैशन, वो सेल्फ लव, वो पीस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्रिएट होती है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट अबाउट ओनली द स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट हम बोलते हैं. स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल, and then you are just being that energy of true परसेप्शन. आपकी हर एक चीजों को देखने का तरीका, अवेकनिंग का मतलब एक ये भी एस्पेक्ट है कि आपका हर एक स्पेस को देखने का तरीका बहुत ही बदल जाता है. सो द वाई द करुणा रेकी, हमें क्यों चूज करना है? इफ वी आर द उसुई रेकी हीलर or we are doing the different reiki healing in our space, and if we are not into the reiki space, so why we choose first karuna reiki? Because karuna reiki more working on the emotional aspect, deep trauma which we talk about, called as a ptsd, then past life and karmic cleansing, heart opening and forgiveness, protection from the negative patterns which we called as a shadow self, uh, support our inner child healing, and then in the last few symbols are more into the enhance our intuition and the spiritual growth. This is all about the Reiki and Karuna Reiki. Anyone has any query, any question till that, then you can ask, or I just move ahead in this space and then we just do the one small meditation. किसी को कोई सवाल है इस स्पेस में? Then you just raise your hand or we just move ahead in that space. If you have any question about the Reiki, about the Karuna Reiki. Okay, so I hope this is completely clear to everyone. So let's we understand the why, what is the levels of Karuna Reiki. Level 1 is all about the emotional and cellular level healing. 2 is the advanced deep karmic and shadow healing. 3 is the grandmaster empowerment, attunement and teaching others. But 3 is more not only the empowerment and attunement, it is again the much more we are learning into the level 3. So let's see more deep focus. In verse level, we whatever the four symbol we are attuning with this space, that symbols allow us to heal our inner child, DNA cellular memory, our shadow self, emotional wounds, our addiction. So addiction is not about only the alcohol or the cigarette or the tobacco. We have a maybe the some people have a addiction of stressful food eating, or maybe the craving, or maybe the addiction of workaholic, work का addiction होना, or maybe the addiction of completely shopping or chocolates or chai. That is small addictions भी आपके इसमें कवर और रिलीज होते हैं.
anxiety and trauma release. And the beautiful symbols we have in this level 1 is amazing grounding symbol. So then level 2 includes the past life and karmic healing, manifestation, balance, spiritual and material world. So many times it's happened in whenever we are moving ahead in our spiritual journey with the Reiki or with the maybe another modality, then sometimes we are not able to balance our materialistic and spiritualism. So basically, we are not able to balance our lower three chakra and our upper three chakra. So in this level, we have some symbols which are which help us to balance this both aspect and move ahead in our life with not surviving mode, but we can live our life with the thriving mode. Then the physical body cleans, balance of all five elements, and connect into the higher self and guides. So one is more about our emotional and inner child healing. Then second is more about emotional aspect as well as our physical body and fire element healing. And the third is very beautiful once we learn third level. It's allow us to have a beautiful symbols which create a cord cutting, sealing our aura, then expand our aura, creating a beautiful connection with the divine energies. So with that four aspect we can able to attune others, we can able to heal others very beautiful way, and we can able to activate the compassion code within us and the people who we are attuning. So channeling the divine wisdom, even though we are able to create that space where we are able to take messages for us or for the people who are come to you for the healing. So this is all about our all the levels. The dates are all the levels are we already shared in the group. The timings are 2 to 3:30 in this space. We are also learning the theory, and also we are practicing the healing meditations. Then the attunements are 6 to 6:30 morning, and dates are also we shared in the group again. And all these three level what we utilize and we learn. So we understand the creating sacred healing space, full understanding and practice of all the 13 symbols which we learn in the divided part, 4 in level 1, 4 in level 2, and 5 in level 3. Chakra healing, emotional release, and karmic cleansing, distance healing, healing for others, how to attune your students and pass on the lineage, and how to teach Karuna Reiki professionally. So, lifelong access and recording, PDF all and doubt clearing long term access, guided meditation for practice. We will give you the audio. Each level we will give you audio which that audio you can practice. Grandmaster attunement and certification of completion. So every time you just attune with the symbols, then allow the symbols to speak directly to your soul, and just allow the symbol to connect a beautiful connection with the divine energy. So thank you so much for being here. And I hope you all are willing to have a beautiful short meditation. But before anyone has any query, any questions, you can ask, you can raise your hand, then Pooja will unmute you and you can ask. And if you don't have any question, then we will do the short meditation. So anyone has, Pooja? Yes, guys, if you have any questions, you can just raise your hand. किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? कि मैंने ज्यादा इंग्लिश में बोला हो तो किसी को हिंदी में है तो समझ में नहीं आया हो, तो लेट आस्क द क्वेश्चन, सो आई विल। यस, सो बेसिकली आई थिंक एक बार जिसमें मैं बता देती हूँ, ये हम शुरू करें डेट्स तो मैम ने आपको बता ही दिया है। लेकिन ये जो कोर्स है इसमें वी आर रियली वांटिंग अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल ऑफ यू जो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मुझे मेघावी जी ने कहा है कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू इनेबल यू टू लर्न, लाइक नॉट ओनली लर्न बट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आप रियली सबको हीलिंग भी दे सकते हैं, आप इसको टीच भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पास ऑन द अट्यूनमेंट, बिकॉज वी विल मेक श्योर कि हम आपको इतने टूल्स दे दें, इतनी तरह से आपको पक्का इसमें कर दें कि आप इसको एज अ प्रोफेशन
रियली ऑन द डे इट इज गेटिंग ओवर, नेक्स्ट डे से आप इसको शुरू कर पाओगे। दैट इज वाई हमने बीच बीच में गैप भी दिया है बिटवीन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो हम इसको काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे करा रहे हैं, बहुत डीप लेवल पे करा रहे हैं। सो जिसको भी रजिस्टर करना है वो बता सकते हैं मुझे। और अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो अभी नहीं पूछना है तो बाद में कभी भी यू कैन गेट बैक टू मी, और अभी पूछना है तो राइट नाउ ऑल्सो यू आर देयर। सो मैम वी आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन, बट मैं एक बार Yes. सा हाँ. कुछ Yes, yes. अनाउंस कर सकती हूँ। हाँ। Yeah, definitely. सो Yes. जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम मैं चाहती हूँ कि एक थोड़ा सा आई वांट टू गिव अ स्मॉल गिफ्ट। I'll just add myself as a spotlight. Yeah. So मैं एक छोटी गिफ्ट देना चाहूंगी। आप में से काफी लोगों ने तो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो उनको भी ऑफ कोर्स ये मिलेगा गिफ्ट। एंड आज के लिए ही ये है कि 24 नवंबर मिडनाइट, आज रात 12 बजे तक जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं करुणा रेकी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, चाहे वो 5,000 दे के ही कर रहे हैं या तो पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन है कि आप आज 2,500 करके कर सकते हैं एंड 15 दिसंबर को आप रिमेनिंग 2,500 करते हैं, so that option is also there. But those of you who are registering today with either full or half payment, I would like to extend a small gift offer from my side, जो कि मैं एक बार डिटेल्स आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि क्या गिफ्ट कोर्स मैं देने वाली हूँ। सो आई बिलीव आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये मेरी वेबसाइट पे कोर्स है विच इज़ द न्यूरो साइंस ऑफ हैबिट्स। अभी हैबिट्स क्या है, सबसे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, क्योंकि अगर हम करुणा रेकी भी सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं लाइफ में, अगर हम उसको रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमको उसका न्यूरो साइंस समझना होगा। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं मैम हम सब पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो रोज थोड़ा थोड़ा जो करना होता है वो कर नहीं पाते। ऑल्सो न्यूरो साइंस या न्यूरोप्लास्टिसिटी इसमें भी काम आता है कि अगर हम कोई चीज़ गिव अप करना चाहते हैं, हमको पता है कि हमारी कोई हैबिट है, चाहे वो ओवर थिंकिंग की है या कोई भी अनहेल्दी हैबिट है ये जो हम छोड़ना चाहते हैं, या कोई अच्छी हैबिट है जो हम अपनाना चाहते हैं, कि हम रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग अस। तो ये पूरा एक साइकोलॉजिकल साइंस है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरो साइंस कहते हैं, जिसमें हम अपने ब्रेन को समझेंगे कि कैसे काम करता है हमारा ब्रेन, कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है तो हमको स्ट्रेस होता है, कौन सा एक्टिवेट होता है तो हम ठीक फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। ये सब आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। आपको कई सारी टेक्निक्स, ये टोटल 10 दिन का कोर्स है जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 10 दिनों में आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाएंगे कि इसको कैसे एक्शन में ले। ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान है, एक्चुअली में कैसे करना है वो आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स द्वारा आप ये कर पाएंगे। ठीक है, एक्शनेबल चीजें हैं। ऑफ कोर्स द एनर्जी एक्सचेंजेस 888 पर आप जो आज रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए ये फ्री होगा। और जो कौन सी 4 लाइक जगह है हमारे जीवन के जिसमें हमको ये करना चाहिए, डाइट होता है, मूवमेंट होता है, माइंडफुलनेस और सस्टेनेबिलिटी होता है। हैबिट लूप के बारे में आपको सिखाया जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स की व्हाट इज द मैकेनिज्म। एक बार अगर आप इसको साइंटिफिकली कर लोगे तो अपने आप हैबिट बहुत इजीली हो जाएगी एक्टिवेट। ठीक है, वाई हैबिट्स फेल, सेटिंग द सीन फॉर हेल्दी हैबिट एंड डिफाइनिंग द वाई। ये आपको असाइनमेंट में सिखाया जाएगा कि कैसे वाई करना है डिफाइन, ताकि आप इसको कर सके। 4 इफेक्टिव अप्रोचेस टू हैबिट चेंजिंग, मैंने जैसे कहा हैबिट चेंजिंग का भी इसमें है। ये हाइब्रिड मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है। हेल्दी गोल्स वर्सेस नो गोल्स, स्मार्ट प्रिंसिपल, ये सारा कई सारी चीजें, जैसे हाउ टू डील विद ऑब्स्टिकल्स। कई बार हम चीजें शुरू तो कर देते हैं पर उसको खत्म नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करना है कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको दिखा बताई जाएगी। और ये 10 डे की कोर्स है एंड दिस इज offered as a gift course to everyone, only of to those who are joining today or to those who have already joined in. So that was it from my end, and we will begin the session with a short Reiki meditation जहाँ पे हम रेकी एनर्जी को फील करेंगे। बिकॉज अगर हम सीखे या नहीं सीखे, अभी तो हमारे अंदर फ्लो करती है, तो वही मैम हमको गाइडेंस देगी। और अभी भी अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं ये लिंक, कोई बीमार है या कुछ भी है, तो बहुत फर्क उनको पड़ेगा। इट्स अ वेरी लाइट मेडिटेशन। शी इज़ अ ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मेघावी जी, एंड वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड कि हम ये रिसेप्टिव होके लेट अस सेट द इंटेंशन एंड लेट अस टेक द हीलिंग। यस। सो Yes. So for that, if possible, then on your videos we can more connect with energetically, and we can able to perceive the energy also. So possible, then just please on your video and just sit down
with the relaxed position. If possible, then sit down. If you're not possible in your space, then you can receive this healing with the lying down position. So thank you so much, Sam. आपका नाम तो नहीं पता है, but whoever is it, is, thank you so much for turn on your video. So anyone else who are here, I can wait for 2 minutes if you wish to on your video. Just complete your work, and if you are not, if you are traveling and driving, don't join in this session, and you can leave this session because this is very deep work. And if you are into the space of only the completely receiving mode, it will give you more benefit. Yeah. So thank you everyone for being here. Let's reconnect with our body. Just close your eyes. Surrender yourself and just completely breathe in and breathe out. And just breathe in and breathe out. And beautiful healing we just call upon all the Devi Devas, guide, master, angels, guru, archangels, whoever we are believing in. Just connect with them, call upon their energy, and we just ask them to contribute to us in this beautiful healing. Feel their energy around you, sense that energy around you. And in this beautiful sacred space, just ask, only one ask, put in this healing space in which area you are looking for ease. And during this meditation, after this ask, just surrender yourself. And this choice and surrender allow you to receive the messages for you. When any thought, any emotions coming up on this space, allow them to release through this meditation and through this healing. आपकी स्पेस में कोई भी इमोशंस, डिस्कम्फर्ट या थॉट आ रहे हैं, उसे इस फीलिंग के साथ अलाउ कीजिए कि वे रिलीज हो जाए. एंड मोर यू रिलीज, मोर you create the clarity in this space. And this clarity allow you to receive the divine messages. Messages कभी बहुत सिंपल होते हैं, like you have to change your diet, you have to change your lifestyle, you have to sleep more, you have to take rest for 3 days, you have to trust yourself. These are the very simple messages you will receive. Maybe in this meditation, then just be with that messages. And now let me start. You just focus on your root chakra, base of the spine, and receive the beautiful healing energy. With this beautiful healing energy, allow your root chakra to connect with the Mother Earth, create a beautiful grounding. And through this grounding, allow this energy to release all the fear, all the insecurity.
Now, slowly and gently, move your focus on the sacral chakra. आपका ध्यान नाभि के नीचे sacral chakra पे लेके जाइए और ब्यूटीफुल सिंबलिक एनर्जी को अलाव कीजिए to release all the stored emotions into the Mother Earth and embrace your creativity. Now, the focus on your solar नाभि के ऊपर आपका पूरा ध्यान लेके जाइए and allow solar chakra to receive this beautiful healing energy and release all the controls, all the doubts, and create a beautiful flexibility. Now, you just focus on your heart chakra. Allow your heart to release all the hurt, all the pain, all the unloved feeling, and create the energy of compassion, love, and forgiveness.
Now focus on your throat chakra, connect with the energies and receive. And with this receiving, release all the unworthiness and take back all your power, the power of worthiness that you are good enough and you can speak out for yourself. Now focus on your third eye, release all the overthinking and allow this healing to give you the clarity. Clarity, whatever you ask, you have that clarity attached with that ask. Now focus on your crown chakra. Connect with the universal energy flow. Allow this flow to guide you, give you the awareness, give you the messages. Imagine a beautiful white light showering on all of us.
Now imagine a beautiful golden white light showering on all of us. All the contributing beings are blessings to us. Receive this blessing. These blessings energized our aura. Create the expansion of our aura, and that expansion create a very magnificent space around us, which allow us to fulfill our asks, our joys. Now, once you feel, place your hand on your heart and be grateful towards all the contributing beings. Thank you, thank you, thank you. All the Devi Devas, guide, master, angels, archangels, guru. Thank you, thank you, thank you. Thank you, all the participants who are contributing to each other. Thank you, thank you, thank you. Thanks to yourself. Thank you, thank you, thank you. Thank you, body. Thank you, body. Thank you, body. Slowly and gently rub your hands. Place on your eyes with a beautiful smile. And if you have water beside you, just drink some water. If possible, you can share your feedback and also you can ask if you wish to ask anything. पानी पी लीजिए सभी. Feel so light. Yeah, it's I amazing. kept the session open only, तो अगर आपको शेयर करना है तो आप अनम्यूट अपने आप कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर आपको कैसा लगा. डिड यू फील समथिंग? Yes, Shwarna ji, you wish to say something? Yeah, unmute yourself from your side only. Hmm. Ma'am, I was getting a lot of yawning while Yes. the meditation Yes, so from this the is the, solar plexus chakra. Yes. yeah, I can see, I also observe that. So this is a sign of releasing. So many times we release through the tears, we release through the yawn, we release through the bubs. We release to the sweating, or sometimes some people having a maybe little bit sneezing, loose motion, or lot of urination. So these all are the signs of releasing Right. of stuck energy. Yeah. Okay, ma'am. And Ma'am, I how? have done the level one of the Sai Reiki just recently last week only. So after that, can I do this? I have not completed all the levels, that particular. Yes, completely okay. Because if you not also learn the Usui Reiki, also Mm. you can be the part of this workshop. So this is the very good things for you, that you are also Mm. tuned with the Atlas Universal Energy. Yes. Because first level you Okay. only the tuning with the energies. Yes, yes. Okay. हाँ, second Only level from से last symbols week I आते have हैं. done, and this workshop came, so I thought maybe I'm aligned to do this. Yes, yes, Anyways, completely. I do Because always do हाँ, your workshop. All of the workshop I'm yeah, doing. I know. Yes, yes, yes. Mm. तो डेफिनेटली सुवर्णा जी, आपको जो लेवल 2 उसमें देखिए और लेवल 3 में जो सिंबल्स आते हैं, उसमें से Mm. 2 सिंबल करुणा रेकी में ऑलरेडी आ जाते हैं. ओके. Oh. सो दिस इज, पर अभी तक वो सिंबल वैसे भी आपने उसमें ट्यून नहीं Mm. हुए होंगे, क्योंकि वन में तो सिर्फ हम Mm. यूनिवर्सल हाँ, एनर्जी से चोकपुर ट्यून होते हैं. से है कि हाँ. उतना ही हुआ था बस मुझे. अच्छा, इस शुक्र से कि आपको वन में ही Mm. करा दिया था, दैट्स ग्रेट. तो फिर आपको हाँ. तो सिर्फ यहाँ पे आप सीख लोगे तो आपको Mm. उसूरी रेकी का भी सभी आ जाएगा मोस्टली. Okay, ma'am, I'll be doing. Thank ठीक you. है ना? Mm. हाँ, ओके डियर, थैंक यू Thank सो you. मच. एंड Mm. यस संगीता जी, यू विश टू से समथिंग? यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आप उनको पॉपअप भेज दीजिए, शायद वो हाँ इजी मैंने रहेगा भेजा उनके है. लिए.
देखिए आपको आया, Okay. होस्ट इज आस्किंग टू अनम्यूट। Yes, yes, संगीता जी. Yes. मैम वो सुबह से जो बैक टू बैक वर्क होता है ना, तो फिर मैं जब मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे मतलब विद इन फ्यू मिनट्स मुझे बहुत नींद आ जाती है और मैं सो Yes. ही जाती, बैठे बैठे भी सो जाती हूँ। Yes, yes, yes. So sometimes this is the sign of surrender. तो जैसे जैसे आप रेकी की प्रैक्टिस करोगे आपको एक्नॉलेज होगा कि ये सरेंडर है या एस्केपिंग मोड है. ओके. एस्केपिंग मोड हम्म। होगा तो भी वो धीरे धीरे वो भी रिलीज होगा करुणा रेकी लेवल 1 के सिंबल से ही. ओके। ओके. सो उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद को अलाइनमेंट आएगा कि यस ये मेरा एस्केपिंग मोड था क्योंकि मैं इस स्पेस में से बाहर ही नहीं निकलना चाहती हूँ. कभी कभार होता है ना नोइंगली हम ऐसा एक क्रिएशन बनाते हैं जैसे मैंने चॉइस के एस्पेक्ट पे बनाया है. हमारे हाथ में चॉइस है हम ये भी बना सकते हैं ये भी बना सकते हैं. ओके. हम्म। सो मे बी अननोइंगली यू क्रिएटेड दैट चॉइस कि नहीं ये मेरा हार्डवर्क लिखा ही हुआ है मेरे यूनिवर्स में और मुझे करना ही है तो हीलिंग करूंगी तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगी. सो समटाइम्स दैट इज द एस्केपिंग मोड और समटाइम्स दैट इज द सरेंडर मोड. बट आपका कौन सा है वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करके जाओगे आपको अलाइनमेंट आती जाएगी. ठीक ठीक है। ठीक है ना. ओके संगीता जी. और थैंक ये यू। अभी के इसमें आपको कैसा फील हुआ इवन तो आप नींद में ही चले गए होगे तो भी आपको कैसा आफ्टर अवेकन आपको कैसा लगा. मुझे बहुत शांत लगता है, जैसे जो भी चलते रहते हैं ना थिंक थॉट्स जो भी है वो वैनिश हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। हाँ. सो देट इज फॉर यू दैट इज द सरेंडरिंग मोड. मे बी आप डिवाइन एनर्जी और आप रिचुअल्स और रिलीजियस पे भी बहुत ज्यादा बिलीव करते होगे. सो आप जब ऐसी कोई मेडिटेशन चूज करते हो तो आप सरेंडर मोड में आ जाते हो completely. So that is the good sign. Yeah. Thank you, या dear. Yes. Yeah. So if you have a back, यानी आपको अभी भी बैक पेन है, शांता जी, if you are able to talk, then that is a great for me to have you clarity, give you clarity. अभी भी है. बट आपको मेडिटेशन के दौरान हुआ था या उससे पहले ही था. इफ आपको पहले नहीं था और अभी मेडिटेशन के दौरान हुआ है क्या है मुझे आप बताओगे तो मुझे आइडिया आएगा डियर. सो आई जस्ट आफ्टर मेडिटेशन. ओके. सो यहीं से मैं इनके सांता जी के सवाल से ही मैं आप सभी को भी एक क्लैरिटी देती हूँ. समटाइम्स सम मेडिटेशन एंड आफ्टर सम हीलिंग्स व्हाट हैपन हमारे कुछ इमोशनल एस्पेक्ट और कुछ एनर्जी स्टकनेस है ना रिलीज होना स्टार्ट होती है. बट कहीं ना कहीं वो रिलीज होने के दौरान भी एक स्टेज पे वो स्टक हो जाती है. तो जस्ट यू ड्रिंक मोर वाटर दैट अलाउ यू टू रिलीज दोज एनर्जी. जैसे अभी सुवर्णा जी ने बताया तो उनकी यॉर्निंग से उनको रिलीज हो रहा था. बट कभी कभार हमें रिलीज भी करना है बट सम और अदर वे वी हैव अ मे बी फियर ऑफ चेंज फियर ऑफ lot of things we have in our space that not allow us to release. तो जैसे ही आप थोड़ा हल्का मूवमेंट करोगे और आप पानी पियोगे तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगी और आपको बेटर फील होगा. एंड स्टिल इफ यू आर नॉट. Yes, see the result. Yes, Santaji. Yes, great. So either you just do the deep breath, or you just आज इसीलिए मैंने बोला कि आप पानी पी लो एक ग्लास. तो काफी आप डीप ब्रेथ करते हो या पानी पी लेते हो या आप सिर्फ खड़े होके थोड़ा मूवमेंट भी करते हो ना तो वो पेन इनकेस ड्यूरिंग मेडिटेशन आया है तो वो रिलीज हो जाता है विद इन अ 12 to 24. यानी अभी से लेके 12 घंटे के अंदर वो रिलैक्स हो जाता है. सो आई होप यू लव्ड दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन. And let's we create magic with this Karuna Reiki. And believe me, this Karuna Reiki symbols are very beautiful. All the 13 symbols are very powerful. I am teaching this since last 3 years and even though सिर्फ लेवल 1 के बाद ही लोग अपने स्पेस में इतनी मैजिकल रिजल्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्रिएट करना. सो आई होप यू ऑल आर ऑल्सो ज्वाइन दैट वर्कशॉप and start creating magic in your life and everyone's life, because the compassion is all about connecting with your own soul, being that energy of compassion. Because the healing energy is all about the feminine part, and once you be that feminine matrutva motherly love, and that compassion is again the karuna bhav is all again the
femininity aspect, and once you be that energy, you create lot of magic in others healing modality, whatever you are practicing in, and whatever you are doing, even though you are the baker, if you are doing some other work, the Karuna Reiki contribute to you in that professional aspect also, because you become that energy. And femininity is all about the creation, so you are able to create a lot of magic and mysteries and a lot of money in your space. So let's we meet soon, and thank you so much, Pooja ji, and everyone for creating this call for today. Yes, thank you so much. Thank you to all the participants. Thank you to you, Dr. Meghavi. Hopefully, see you all soon, very soon. We're starting from Yes. 26, right? 26. Yes, 26, 27, 28 is our Karuna Reiki level 1. And this is amazing space, even though level 1 4 symbol is obviously very powerful, because this is completely for your emotional healing and inner child healing. Yes, so see you soon, everyone. And thank you so much. Keep smiling,